because a lot of our friends and people are waiting for us, right? Okay, we are, I think, live on YouTube as well, and we are live as well as on Zoom. Perfectly fine. But before we start in, just wanted to know whether my audio and video is clear. Whether my audio and video is clear. If it is clear, you can just write clear in the chat box, guys. अगर clear है तो please clear लिख दीजिए. If it is clear, just write clear in the chat box. If it is clear, just write clear in the chat box. फटाफट 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 clear लिख दीजिए. I'm waiting for your confirmation, external confirmation SA505. बताइए बताइए. अरे YouTube की जनता बता दो. YouTube की जनता जहां भी कनेक्टेड है प्लीज बता दीजिए, है ना? ओके, क्लियर है क्लियर है क्लियर है. ओके, परफेक्टली फाइन, ग्रेट. अच्छा, जस्ट ऑल्सो वांटेड टू चेक हाउ मेनी ऑफ यू आर कनेक्टिंग फॉर अ फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, डेली, राइट? कितनी बार मुझे पहली बार मिल रहे हो, दूसरी बार मिल रहे हो, तीसरी बार मिल रहे हो, राइट? डेली देखते हो मुझे. द फर्स्ट टाइम यू कनेक्टिंग फॉर द सेशन. ओ माय गॉड, पहली पहली बार. ओके, ग्रेट 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 ग्रेट. डेली, अच्छा. ओके, परफेक्टली फाइन, क्लियर क्लियर क्रिस्टल क्लियर. डेली फर्स्ट टाइम. ओके, वी हैव अ वैरायटी ऑफ 55th टाइम. ओ माय गॉड, ही लाइक काउंटिंग. अच्छा हो गया भाई, तू गर्लफ्रेंड से मिलने नहीं जाता, नहीं तो तू उसको भी गिरा देगा. ओके, परफेक्टली फाइन. वी हैव वैरायटी ऑफ पीपल. इट्स अ 13th डे. ओके, 13th डे. ओके, ग्रेट. है ना? So great, guys. Welcome everyone, and those who are connecting for a first time. Just also wanted to know for a fraction of second, how do you feel, guys, after becoming a CA? कैसा लग रहा है? हाँ, मैं बताता हूँ क्या होता है शुरू शुरू में. I'll tell you my journey. है ना? Initially 2-3 days once you become a CA, right? तो 2-3 दिन तो you'll get a respect in your family to a next level. है ना? 2-3 दिन मम्मी आपको पूछेगी बेटा क्या बनाना है खाने में. You tell मम्मी पनीर की सब्जी बनाओ. Then next day you'll ask mom will ask you which sabji you want. Then you'll tell मम्मी XYZ सब्जी बनाओ. राइट? बट आफ्टर फ्यू डेज उल्टा होता है. मम्मी बोलती है जा सब्जी लेके आ. आ हा 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 हा. मतलब द थिंग्स आर चेंजिंग. यस, ऑफ कोर्स, दैट इज देयर, दैट इज वन. सेकंड, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वन मोर थिंग विल हैपन विथ यू. है ना? मेरे को नहीं पता आपको ये डायलॉग मिला है कि नहीं. है ना? आफ्टर 7 days आफ्टर आई बिकम अ सीए, है ना, मैंने कुछ छोटी सी एक गलती कर दी थी घर पे. मैं कुछ तो गलती कर दी थी, और उस गलती का मुझे डांट इस तरीके से पड़ी. मतलब डांट का वेराइटी चेंज हो जाएगा, आई एम टेलिंग यू. है ना? पहले आपको बोलते थे ऐसे क्यों करते हो. नाउ योर मॉम एंड डैड विल से बेटा तू सीए है, सीए होके ऐसी गलती करता है. राइट? आई डोंट नो ऐसा किसी को मिला है या नहीं मिला. एनी वन ऑफ यू गॉट दिस टाइप ऑफ डांट, बाय द वे? हाँ, उस डांट में सीए का तड़का डल जाता है ना? राइट? दिस इज गोना बी हैपनिंग. द थिंग्स चेंजेस, द वे योर पेरेंट्स आर गोना बी डिलीवरिंग द थिंग्स आर गोना बी चेंजिंग, राइट? आई होप एनी ऑफ यू हैव गॉट दिस टाइप ऑफ डांट. यस और नो इन द चैट प्लीज. मुझे तो आज भी मिलती है. दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट यस. Okay. So yes, this is how the journey goes, right? This is how the things changes, right? But one of the best thing about us, of course, we have achieved what we wanted to, and today we are here to think and working on our career, right? And I'm really happy and proud to say that since we are, I think, more than 200, 300 people connected here, right? And it itself showcased that you wanted to do something big in your life, and that is why you're sitting here on Saturday evening, skipping some movies and your friends meet up and whatnot, right? So it's genuinely showcase that you are here to build something great for your career. Okay, perfectly fine. So since you're here, I want you to take the session more seriously because आए हो तो कुछ सीख के जाओगे, तो यहाँ पे मेरा KRA अचीव होगा, राइट? एक सेकंड दो. हाँ, अगर आए हो तो यहाँ पे कुछ सीख के जाओ तो काम का, नहीं तो फिर इट्स लाइक अ मूवी. है ना? आप बढ़िया से 1-1.5 घंटे 2 घंटे हीरो को देख रहे हो, एंड देन यू फील लाइक कोई पूछेगा कैसा था तो सब अच्छा ही था, ऐसे ही बोलोगे. एंड आई एम नॉट सेइंग दैट कि आई एम अ हीरो, बट आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर हियर, राइट, प्लीज आस्क योर डाउट्स, डू नॉट हेजिटेट, एंड इंक्रीज योर अवेयरनेस लेवल. हाउ डू इंक्रीज योर अवेयरनेस लेवल? बाय कीपिंग योर वीडियोस ऑन, by asking a good questions, right? We'll ensure that we'll sit here till all the questions are answered. ठीक है? तो जो भी जूम पे कनेक्टेड है गाइस, आपकी शक्ल दिखा दो यार. डू नॉट हेजिटेट बिकॉज वी वांट टू प्रैक्टिस फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स फॉर आवर इंटरव्यूज, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है? एंड ऑल्सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू हैव अ पेन एंड पेपर, राइट? पेन एंड पेपर ला लो बिकॉज विल बी नीडिंग दिस आउट. पेन एंड पेपर इज समथिंग विच विल मेक सम लॉट ऑफ नोट्स. ठीक है? So that you'll get to know about detailed discussion on ICAI campus, which all companies are going to be coming, how you're going to be preparing, what is something which you need to keep in mind, what is going right, what is going wrong. ठीक है? फटाफट एक पेन एंड पेपर उठा लीजिए, जल्दी जल्दी जाइए, एक पेन एंड पेपर या नोटबुक उठाइए,
अच्छा, कोई देख रहा है वो एसएफएम की पेज के कुछ पेजेस बचे हैं, उसको उठा के उसने लिखा है और उधर ही नोट्स बना रहे हैं। वाह, कोई बात नहीं, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। ग्रेट। So great, without wasting much of our time, let's start. So I think everyone is familiar with this website of ICAI Campus Placement, right? This is a website, cmib.ici.org. If you have not registered for ICAI Campus, the last date for the registration have been increased to 29th. 29th of January is the last date. जिन्होंने नहीं किया है, request you to please go and register for the same. That is point number one. Point number two, those who have got and registered, bang on, very good. You must have selected the center as well. But what is one thing which we are going to be discussing here is about the companies which are going to be coming to the campus. हम हर एक company का variety and type of questions, type of things which are going to be asked, we are going to be discussing in detail today. इसके साथ साथ one more important thing, I would request all of you to keep a track on the ICA portal every time, because first thing which is very very important, and that is your shortlisting for the campus which is there. अगर आपका shortlisting की मैं बात करता हूँ, तो the shortlisting for the campus which is going to be there, which is mostly going to be starting from 7th of January to 9th of 7th of February to 9th of February, right? तो आपको 7th of February को you'll get to see which all company have shortlisted you, not on first, राइट? फर्स्ट को तो कंपनीज को डेटाबेस मिलेगा, बट 7th of February एक बार डेट नोट डाउन कर लीजिए, दोस्तों हियर 7th of February को यू नीड टू लॉग इन टू एन आईसीआई पोर्टल एंड सी विच ऑल कंपनीज हैव शॉर्टलिस्टेड यू. It will, the shortlisting is purely going to be depending on the center which you have chosen. So say for example you have chosen a Pune center, तो पुणे की जो कंपनीज आई हैं वही आपको शॉर्टलिस्टिंग देगी, बाकी सेंटर की कंपनीज विल नॉट बी एबल टू गिव यू शॉर्टलिस्टिंग. जस्ट अ बेसिक स्टफ फॉर ऑल ऑफ यू. Next, very important, it's also important to go through the portal every time, because once your shortlisting is done and once the interview will be starting, you'll be able to see a roster. What does a roster means? ध्यान से देखेंगे, आज की न्यूज में जा रहा हूँ. Let me just show it to you how does a roster looks like. ठीक है, एक आपको रोस्टर दिखाते हैं. इस तरीके का रोस्टर दिखेगा. दिस इज गोना बी हैविंग अ नेम एंड डिटेल एंड योर रोल नंबर कि कब आपका इंटरव्यू कौन से टाइम पे है. ये मेल पे नहीं आएगा. दिस इज नॉट गोना बी शेयर्ड विद यू गाइस ओवर ईमेल. दिस इज गोना बी कमिंग हियर इन द आईसीआई वेबसाइट इटसेल्फ. यहीं पे आएगा. तो इस वेबसाइट को रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ओपन ऑन अ फ्रीक्वेंट बेसिस. Sir, next question is the list which is shared by the Institute of Chartered Accountant. Is this list gonna be a permanent list? मतलब क्या कि यही companies आएगी, or there are more companies which are going to be added to the list? Yes, the more companies will be added to the list, but this is mostly a draft list which is going to be there. 99% यही रहेगा. 90% यही रहेगा. 10% probability that few more companies will be added to the list which is there. Right? चलो. Now let us go and start analyzing each and every company in detail. I have prepared one detailed summary file for you guys. I'll try to share the summary file at the end. Right, the summary file will be shared in our WhatsApp group of November 23 CA community. I hope every one of you have joined in. Right, if you have not joined in, yes, you can join the same. The link will be shared to you guys in the description of a YouTube video. वहां से आप join कर लीजिए, और I'll share it over the Zoom chat in a while. तो दिस इज लिस्ट विच इज देयर. आई थिंक आज अपडेट हो गया है. 140 कंपनीज हो गई हैं इंस्टेड ऑफ 140 डिफरेंट सीरियल नंबर्स आर देयर, बट जब मैंने बनाया था इस 136, ओनली फोर कंपनीज आर एडेड, बट ठीक है. So if you could see, this is a center-wise allocation of a list of companies which are there. Ahmedabad 5, Bangalore 29, Chennai 13, Hyderabad, Delhi 15, Hyderabad 10, Jaipur 7, Kolkata 10, Mumbai 39, Pune 8. Now let us go to analyze each and every company in very detailed manner, right? Which I'm going to be discussing in very detailed manner, and for that you need to pay 100% attention now. Now, one thing, if you could see, the first company which is going to be coming is an Accenture solution, which is coming to almost all the centers, right? Except I think Delhi. Delhi के अलावा ये सभी centers में आ रही है Accenture solution. Now, Accenture solution क्या करती है, और what role mostly this company is going to be coming, and what is the CTC which is going to be offered. Since I'm into this industry, तो मुझे बहुत डिटेल एनालिसिस पता है, और हम लोग को पता होता है कौन सी जीडी के लिए आती है, क्या रोल्स होते हैं, राइट? तो मैंने क्या किया है, सैलरी वाइज भी ब्रेकअप डाल दिया है इस कंपनीज का. तो मोस्टली एक्सेंचर आपको जो सैलरी देगा, इट्स गोना बी दिस, विच इज 11 to 11.5 के आसपास का इनका सैलरी रेंज रहता है एक्सेंचर सॉल्यूशन का. बट द क्वेश्चन इज, सैलरी तो ठीक है, कौन सा रोल ऑफर करेंगे? ठीक है. तो नाउ आई विल शेयर द आईपैड में आपको मैं पैरेलली समझाते जाऊंगा कि कौन कौन से रोल्स मेजरली आपको कैंपस में दिखेंगे, कौन कौन सी टाइप की कंपनीज दिखेगी, एंड व्हाट टाइप ऑफ प्रिपरेशन इज नीडेड फॉर ऑल दोस कंपनीज व्हिच इज देयर. ठीक है. इफ यू फील लाइक नोटिंग इट डाउन, यू कैन नोट इट डाउन. एंड इफ यू फील लाइक कि आपको ये पीडीएफ चाहिए, तो आई विल आल्सो ट्राई टू शेयर दोस पीडीएफ एट द एंड ऑफ द सेशन, डोंट वरी.
ठीक है, just give me a fraction of a second, let me share my screen. Okay, perfect. The first type of companies, types of companies which are going to be coming. First type of company is you'll find big six firms, right? काफी बार आपको big six firms दिखेगी. Again, I'll divide this into two. First is your Indian firms, and second is global firms. Okay, Indian firms and global firms. Now, mostly the global firms I have seen in the campus come for two major roles. First is they'll come for assurance services, and second is risk services. Assurance is nothing but what is your statutory audit. Risk is nothing but what is your internal audit role. Okay, which is there. If you could see which all companies of the part of a global are coming, first is KGS, which is KPMG Global Services is coming, right? अगर आपने देखा होगा अच्छे से, or if you've not gone through the campus file, don't worry, I will discuss it in detail. Second, EY GDS is coming in campus, and third is PwC HDC Bangalore is coming. ये तीन companies आ रही है ICAI campus में, which is there, which is coming to the different centers and different list. Right, two different roles पे लिए आएंगी, एक assurance and risk. And risk is internal audit, assurance is statutory audit. Out of this, KGS का interview process समझ लेते हैं. The first round mostly is gonna be a test, which is gonna be AMCAT test, which is gonna be a English communication listening test. AMCAT test नाम के test लेगी ये company, and this is gonna be an English communication and listening test, which is gonna be there, which is also called as a version test. So you need to give this test. After that is done, you will have mostly one or two round of interview, which is gonna be a manager round, and then you will have a partner round. ठीक है, तो ये आपको एक overview मिल जाएगा when you're going to be going for the interview which is there. Now the question is, what is the CTC range you will offered or you'll be getting here? Mostly you'll get a CTC range of 10 to 13 lakhs as a part of CTC here when you're going to be joining any of these companies. ये salary range और salary band आपको दिखेगा when you're going to be part of this. ठीक है, this is the global firm which is mostly I have seen in the campus which is participating. Next, the Indian firms. Indian firms can come with a multiple vacancies which are there. Either it can be stat audit, internal audit, direct tax, indirect tax, and transfer pricing. यही ज्यादातर vacancies you will find out in campus which is there. Rarely I have seen they are coming. Rarely which is coming on campus for FDD. Rarely I have seen they are coming for M&A tax. Or rarely I have seen they are coming for valuations. One more important thing for the people, those who are targeting this roles, which is FDD, M&A tax. One more important update. This companies, lot of big fours are started hiring off campus for the same. Right? जैसे अगर आप LinkedIn ढंग से चलाओगे तो आपको you'll be able to find out a vacancy for BDO, FDD. There is a vacancy for EY, FDD, which is going in a market. अच्छा, please don't give me this weird look कि ऐसा कैसे हो रहा है. ऐसा इसलिए हो रहा है because companies will not wait for a campus. Companies को vacancy है वो fulfill करेंगी, right? So you also need to prepare as well and you need to apply off campus, guys. I repeat, your preparation is important and application of off campus is important. तो ये दो vacancies generally rarely आपको मिलेगी in a campus. Now, let us talk about which all companies this time is participating here. You can see the first I could see here, which are companies like SR Bartley Boy, right? SR Bartley Boy is coming. Bartley Boy, which is nothing but what? EY. Then you could see Suresh Surana. Suresh Surana is RSM, right? It is again a top firm, right? Which is coming. So these are the two major firms which I could see out of big six firms coming, right? Which are coming in the campus. But बाकी क्यों नहीं है? PwC, Deloitte, Grant Thornton. I could not see the names of the companies coming to the campus, but yes, these companies you can trace it off campus. ठीक है, campus में जितनी मुझे दिख रही है उतनी I'm just sharing it to you guys because it's a campus discussion. The first category of a companies which are coming is the Big Four category.
I hope this is clear to all of you. Any doubts here, you can put it in the chat. Sir, what all rounds are taking in FDD and M&A tax? So, इसके लिए we'll have a separate session on FDD and M&A tax, but yes, FDD involves a case study round. वहाँ पे case study round होता है, for which you need to solve the case study which is there. Okay. Any doubts here which if you have, you can ask. Someone is saying, what is CTC? CTC is a combination of fixed plus variable. One more important thing, the guys who are sitting here, right? Please see the offer letter carefully. There is a high probability that the CTC is 13 lakh, but you might be getting 60,000 or 70,000 in your bank account only. One, first because of TDS, second because of variable component, and third because of joining bonus. कंपनीज आपको इन सब लेवल पे उल्लू बना सकती है, ठीक है? So it's very important to read the offer letter very carefully whenever you're going to be appearing for interview. ठीक है? So that is there. Someone is asking, transfer pricing में वैकेंसी ज्यादा रहती है क्या? ज्यादा नहीं रहती है, रेयर रहती है, बट कम लोग जाते हैं, तो you can easily find out. Okay. Someone is asking, what is FDD? FDD is financial due diligence. इस पे हमने एक सेपरेट सेशन लिया हुआ है, यूट्यूब पे डाला हुआ है, डोमेन वाइज गाइडेंस सेशन. प्लीज चेक इट आउट. ठीक है? सूरज सुराना इज आरएसएम का पार्ट. वो डिफरेंट ब्रांड नेम चलता है ना. आई होप यू हैव स्टडीड इन ऑडिट कि सीए फर्म्स आर नॉट अलाउड टू मार्केट. अरे पढ़े हो क्या? है ना? सीए फर्म कैन नॉट बी अ कंपनी. So it's a thing which a lot of firms do. And where I can find a technical preparation material around, विशाल जी सब बताएंगे. सेशन को आखिर तक बने रहे. First category of companies which are coming to the campus. Second category of companies which are coming to the campus is companies which are relating to the finance role. Finance role के लिए बहुत सारी companies are coming. I'll just draw this chart at the below. The second is the finance role which is there. Now, what all things are there in the finance role? Right. The finance role के लिए lot of companies which are coming. Right. If I could name the top companies which are coming, right, with the good packages. If I say Vedanta is coming, Vedanta is going to be offering somewhere around 21 lakh ka package or 22 lakh ka package. IOCL is coming. IOCL is Indian Oil Corporation, right? Then you have other big companies like ITC, which is coming to the campus. We have Bosch, right? Then we have Reliance. Then we have Misho. We have L'Oreal, right? We have Wells Fargo. We have TVS. We have Shell. We have Pidilite. We have Petronet, right? All these companies are coming to the campus, which are for a finance role. Now, what all role are there which is going to be offered? ध्यान से सुनेंगे. Once you go for a finance role, they'll hire you and they'll give you and say that we are hiring for a management trainee. Right? They'll say that we are hiring for a management trainee role. What is a management trainee role, guys? It is a role which says that we'll plot you under multiple business function, multiple business units / functions, right? Which is there. अब which all functions are there in any of the finance role? Finance role में क्या क्या functions होते हैं वो समझते हैं पहले. The first function is accounts receivable and revenue function. Second function which is there is accounts payable and inventory and expenses function. Third function is treasury function. Fourth function can be internal audit function. Fifth function can be your taxation function, further divided into two: direct tax and indirect tax. This is a function where I'm assuming that the people, those who need, are drawing this, right? Draw kar lo, this might help you. Second, the last function, which is a GL and MIS reporting function, which is there. And also one more function which is there here is FP&A and business finance. So mostly the companies which I've listed before will plot you for a management trainee role. It says will rotate you under multiple business function within a year or 6 months. And we want you to see as a CFO of a company within 10 years. And that is why it's called as a management trainee. Right? This is what you will find most of the companies are coming to the campus. Now, let me just stop sharing the screen and show you the list of companies
which are coming to the campus and hiring for this important role, which is there. Okay. So again, I'm going to the company wise. If you could see here, right, Vedanta is there, right? Adani Group is there, Indian Oil is there, JSW Steel is there, right? This company is there, Coca-Cola is there, है ना? Wells Fargo is there, right? ITC is there, right? Bosch is there, Bharat Petroleum is there, right? The companies which I'm highlighting, right, are mostly going to be hiring for a finance role. ठीक है? अब the question is कि what all things are going to be asked in this domain and what all things are expected in this domain. Very basic. The first basic thing is in a finance domain, mostly they'll check your articleship exposure. And second, imagine that if I'm hiring for a revenue team, which is I'm hiring you for accounts receivable in a revenue team. So I'll be asking you some questions related to Ind AS 115. I'll be asking you questions related to how do you ensure a cutoff procedure is done. If I'm hiring you for accounts payable team, I'll ask you which is a method of valuation of inventory I'll use. How do you value an inventory? राइट ये सब चीजें गाइज आपको पूछी जाएगी सर बट द क्वेश्चन इज आई वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस फाइनेंस का डोमेन डू यू हैव एनी ऑफ द रीडिंग मटेरियल द आंसर इज यस एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से देखेंगे वी आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू गाइज एवरी डे so what you can do you can go to our website click on more once you click on more there's a free resources which is given where you can go here and download the finance reading material the question bank of a finance is given here if you want to download it you can download it and read it out. It will give you an edge. It will give you a better understanding for a finance domain. Similarly, the question bank for all the other domains is also here. Okay. So finance is more relating to your understanding of a business and also understanding relating to what you have done in your articleship. I hope it is clear. Finance में क्या होगा? Which all companies are coming to campus for finance role? You need to know this. Clear? Yes. Any doubt relating to the finance? Finance role is also going to be hired with multiple names like finance controllership एक बोला जाएगा नाम या आपको बोला जाएगा है they'll also say we are going to be hiring for management trainee ये दो नाम से आपको हायर करेंगे क्लियर है देखो why it is important for you guys it's very important for us to know कि what is going to be happening in the interview if you know this trust me your journey and the process is very simple if you don't know this अच्छा एक चीज बताओ honestly बताना right after becoming a CA, what is your next important goal in your life? Honestly, बोलना honestly. Chat पे बताना. What after becoming a chartered accountant, what is your next big goal in your life? अच्छा कोई कह रहा है सर शादी करना मेरा गोल है नहीं बेटा नहीं शादी वादी हो जाएगी बेटा उसके लिए घर वाले तुम्हारे लिए ढूंढेंगे someone is saying sir पैसा करना पैसा कमाना the correct answer is yes everyone wants to earn the money agree ए झूठ मत बोलो तुमको जानना है कौन सी कंपनी ज्यादा पैसा देती है और वहीं पे तुमको जाना है And और जो वीडियो बंद करके बैठे I would request all of you to keep your videos on because I want to keep the session more interactive. Yes, everyone sitting here सच बताइए is your next goal in a life is to start earning and you need to decide कि कौन से डोमेन में मुझे जाना है and which will make me excited. Agree or disagree? ये तो बताइए चैट पे agree or disagree. Honestly बोलिएगा agree or disagree. YouTube की जनता बोलेगी वीडियो को लाइक करेगी बताइए बताइए बच्चा बोला सही बात है सर this is my next goal in my life to start earning the money and I should know that which domain I should get into and which company can offer me highest package now one more important thing if you want to do this repeat if you want to do this do you think you also need to work hard for this the answer is yes there are a lot of people those who are under a different perception here are thinking that कि भाई मैं एक दिन में इंटरव्यू फोड़ दूंगा नहीं होगा guys you need to genuinely need to work hard to prepare for it. I repeat, you need to genuinely need to work hard for preparing for it. Because do you remember the efforts you have put in for a CA final? Yes. You have put in efforts and because of which you have cleared it. Now is a time where you are going to be making your family proud. Now is a time you'll ensure that and you'll tell your parents. Imagine that you're going to a mom and dad and saying that, Mom, 12 लाख की जॉब लग गई है अगले महीने से 1 लाख रुपए बैंक में आएंगे
Can you feel the happiness which is going to be there in their eyes? It's going to be 10 times more than becoming a CA. Agree? Yes, it's going to be 10 times more. I'm telling you guys, because money is something which will solve most of the problem of your life. अच्छा, एक और इमेजिन कीजिए कि अगर आपको 12 लाख की जॉब मिली है तो खुश ज्यादा होगे, या 15 लाख की मिली है तो ज्यादा खुश होंगे? ऑनेस्टली बताना, सच सच बोलिए, 15 लाख की मिलेगी तो खुश होंगे। बट टू गेट दैट जॉब ऑफ अ 15 लाख, कोई कह रहा है 20 लाख की, ठीक है बेटा, हायर द बेटर, सिंपल। टू गेट अ जॉब into a better companies, the better companies require the better candidates. Agree? अगर तुम्हें अच्छी जॉब चाहिए तो कंपनी भी तो एक्सपेक्ट करेंगे ना कि अच्छा कैंडिडेट आए। यस सर। अगर आपको अच्छा कैंडिडेट बनना है तो अच्छा कैंडिडेट एक दिन में नहीं बना जाता। फॉर दैट यू नीड टू वर्क हार्ड। फ्रॉम व्हेन? फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। राइट? हमने एंजॉय किया जब से रिजल्ट आया था आज तक के, बट यस, henceforth from upcoming days we need to work more hard for our career guys, because it's all about सीए में। आज तक हमने 2 से 3 लाख 4 लाख का खर्चा किया सीए बनने के लिए। एग्री? वो खर्चा कहाँ से वसूल होगा? पैसा कमा के। हाँ, क्यों कह रहा है मैंने 3,30,000 40 रुपए खर्चा किया है? हाँ हाँ हाँ, उसको 40 रुपए भी याद थे। वाओ। ठीक है। तो what is important here is whatever efforts you have put in for your career guys, it's time to get it. प्लीज इसको मान लो, अगला 1 महीना आपके लाइफ का करियर के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो कर लेगा वो आगे बढ़ जाएगा, और जो नहीं करेगा वो हमेशा की तरह एक काम करेगा, एंड व्हाट he'll do, he'll cry and give गाली। एग्री? राइट? तो रोने का नहीं। चीजें नहीं आती है तो चीजें सीखेंगे। रिपीट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, एक और चीज समझ लो, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी डे, इफ यू डोंट नो, ठीक है, इफ यू आर एक्टिव ऑन माई व्हाट्सएप ग्रुप, राइट, आई एम नॉट मेकिंग यू स्केयर, आई एम जस्ट मेकिंग यू अवेयर। ठीक है, छोटा सा आपको अवेयरनेस क्रिएट करता हूँ, right? Because I genuinely feel, if you could see, every day there are lot of new list of companies which are added here, है ना? ये कल नई लिस्ट ऑफ कंपनीज ऐड हो गई जो हायरिंग कर रही है। ये उसके पहले की है, 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 राइट? ये उसके पहले की है, ये उसके पहले की है। ऐसी 60 से 70 से 80 कंपनीज हायरिंग करना चालू कर दी है, राइट? ऐसी कितनी सारी कंपनीज हैं जो हायरिंग करना स्टार्ट कर दी है। अगर आप जितना लेट करोगे उतना जाती जाएगी वो। क्या वो बैठी रहेगी क्या और बोलेगी कि शिवम पलन के लिए वेट करते हैं, शिवम पलन का इंटरव्यू प्रिपरेशन नहीं हुआ है, शिवम पलन कैंपस के लिए वेट कर रहा है, तो मैं हायरिंग नहीं करूंगी? विल कंपनी से दिस? हाँ हाँ, कंपनी यही बोलेगी। द कंपनी विल नॉट से दिस गाइस, अंडरस्टैंड दैट। Once a time and opportunity is gone, it's gone forever, and it will come with one thing, and that is regret. है ना? तो थोड़ा सा प्लीज, from Monday onwards, I want you to prepare well. I want you to work for your career, and that is why it's very important to attend all the sessions which you are doing. ठीक है? Great. I hope you are now motivated enough to work hard, guys. Yes or no? I hope you guys are motivated कि अब यार अब करेंगे अपने करियर के लिए, पैसे के लिए करेंगे भाई, है ना? Yes or no in the chat, please. I hope you are motivated to do and work hard for your career. Yes. YouTube की जनता बोल दो, है ना? Chalo, great. I think most of you are motivated, and I'm also assuming the people those who have kept their videos up are also motivated enough. Perfectly fine. So this is what a role of a management trainee is. But the question is, ki, what is the interview round and the processes here? Mostly there is going to be 2 to 3 rounds, which is there. If I talk about Vedanta, तो वेदांता का इंटरव्यू स्टेप रहेगा, फर्स्ट राउंड ग्रुप डिस्कशन, सेकेंड राउंड which is going to be there is a personal interview round. Third round is again might be personal interview round, and fourth round is of course your selection and offer letter. So mostly you'll have 2 to 3 rounds of interviews in a Vedanta, but GD round is something which is very very important, which you need to clear and crack it out when you're going to be going to this type of companies which is there. If you talk about Reliance, so Reliance का interview step रहता है, first step test, which is going to be a aptitude test, logical reasoning test. Then you have personal interview round and personal interview round 2, depending on a company which is there. ठीक है? तो ये सब उनके राउंड्स रहेंगे. If you talk about some other companies like IOCL में mostly will have one round,
right? But it is going to be a tougher round, which is there. If I talk about ITC, so ITC में भी mostly you'll have 1 or 2 round which is there, but यहाँ पे interview toughness थोड़ा सा ज्यादा रहता है because they'll grill you based on technicals. They'll ask you some tougher questions based on technicals. एकदम simple नहीं पूछेंगे, right? उनका technical बहुत tough रहता है, and they genuinely want some good candidate. है ना, एकदम से आप बोलोगे कि मैंने select हो जाना चाहिए, नहीं. In one of the interview which one of my student was giving, which was for Hindustan Unilever, the interview question was, tell me the amount of debtor balance in a company. Debtor balance बताइए हिंदुस्तान यूनिलीवर का, right? The guy started scratching his head, right? This type of interview questions will be also asked, and this genuinely require a preparation. ठीक है, वो एक दिन में नहीं होगा, right? That is going to be needed because that is very very important. Okay. Chalo. So this is a category 2, which is a finance role, which is there. The third category of a companies, which will here, I'm just writing here, is IT companies. IT companies which are going to be there. ठीक है, इसको मैं स्टार दे देता हूँ. Let me draw here IT companies. So IT companies are here, which are mostly going to be hiring for 3 to 4 different roles. First, they'll come for software side, which is going to be 3 types of major softwares used in IT companies. First is, of course, your SAP consulting, SAP softwares. Second is your ERP softwares. Again, this is a ERP, all the ERP softwares. The second is Oracle. Third is Dynamics 365. इन 3 सॉफ्टवेयर साइड रोल्स के लिए हायर करती हैं. Second, IT companies will mostly hire for R2R role, which I'll cover it in detail. And then you'll find out they'll hire for FP&A as well, financial planning and analysis. And sometimes they will also hire for finance role. These companies might have a different names. जैसे कि Accenture will call FP&A as a CFM analyst. ये काफी अलग अलग नाम से प्रोडक्ट्स को बेचती हैं. ठीक है, you should know it because it's very important, because it's all about your career. Now, which all companies are coming for IT companies are coming to the campus? कौन-कौन सी IT companies campus पे आ रही हैं, डिस्कस कर लेते हैं. First company, if you could see in the list, is Accenture, right? Accenture. Second company, if you could see it carefully, is your Infosys, right? Infosys. Yeah, एक सेकंड ना, the screen got paused. है ना, Accenture है, Infosys है. आजा भाई, आजा 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 आ गए. Accenture, Infosys. This time we are not able to see TCS. नहीं तो generally TCS भी आती है. I'm assuming that the TCS will come. Hopefully, I'm praying to the God कि more and more companies participate, right? But TCS is there. इसके अलावा sometimes you see Capgemini, right? Capgemini is also going to be there. अच्छा, one more company which is there is Oracle, right? Which is coming to the campus. Oracle Solutions, which is coming to the Bangalore center, right? Oracle is coming. ठीक है, तो ये सब कंपनीज हैं जो आईटी रोल के लिए आएगी, और इनमें काफी ज्यादा वैकेंसीज भी रहेगी. जैसे एक्सेंचर माइट हैव 300 to 400 वैकेंसीज, इन्फोसिस विल हैव 300 to 400 वैकेंसीज. ठीक है. नाउ लेट मी अगेन एक्सप्लेन यू द रोल which is there. So what is going to be a role in software side? Mostly the role of a software side is, say for example, companies like Amazon want to implement the software. उसको software implement करना है. कौन सा? SAP. Do you think the accounting entry in Amazon is manually done? बताइए, चैट पे बताइए, क्या Amazon पे अकाउंटिंग एंट्रीज मैन्युअली होती हैं गाइस? यस और नो इन द चैट प्लीज. बोलो ना, बोल भी दो, बोलो. Yes, do you tell me, will the accounting entries in Amazon will be done manually? Fourth one is Capgemini, my friend. The answer is no. So Amazon have the automated bots involved where the accounting entries are captured based on the cutoff. Right? So say for example, when goods are delivered or goods are dispatched based on the revenue recognition method, the accounting entry is going to be there. But do you think we need a software to do this? The answer is yes. Which all softwares are needed? This type of softwares are needed. But who will ensure that the softwares are working correctly? You chartered accountants. Who will ensure that the softwares are prepared well? You chartered accountants. So what you will do, you will go as a SAP consultant to Amazon
You'll understand what is needed to them. You'll tell to the tech team. You'll prepare the software and you'll help them implement it. Who are you? You're a guy working with Accenture in SAP consulting role. ये एक role होता है, right? What type of questions will be asked here? Why technology? Are you aware of SAP? Right? And are you aware of the processes? ये तीन major interview focus रहेगा अगर आप SAP role पे जाते हो. Why technology? Why processes? And have you worked off any of the software before? Second most important role which is there, which is R2R. R2R का एक major hiring चल रहा है, एक CMO संभव program है, right? If you could see Genpact में, right? Genpact is hiring for two major roles, R2R and FP&A. If you have not filled out a CMO Sambhav form, request you to fill it. Once you fill it, you'll start getting a lot of vacancies and calls from our team. तो R2R में क्या होता है? R2R itself says record to report. Record to report. मतलब क्या? In short, from starting of a transaction, that means from starting of a transaction, मतलब accounting entry से एक preparing a MIS report. That is what is called as a R2R. मतलब एक शुरुआत. I don't know how many of you are remembering your 11th standard or 12th standard. हम लोग एक accounting entry से TB बनाते थे, TB से balance sheet और P&L बनाते थे, right? Same, that is a R2R process. From zero to preparing everything which is needed for a finance. That is a major role of R2R. Yes. So major hiring is going to be there in R2R. A lot of companies which I'm just talking about is going to be hiring you for the R2R role. Third, FP&A, which we've already covered, which is nothing but planning the things and analyzing the things. चीजों को plan करो और analyze करो. So that is going to be your role. And of course, a finance function which we have covered above. तो ये चार roles आपको दिखेगी कुछ IT companies में जो hire कर रही हैं. Right? I hope it is clear. R2R का career growth ये है कि you can move to finance role which is there or you can move to a different industry after that. So this is a career growth of a R2R role. Again, the CTC, again we'll come to the CTC portion in a while, where CTC का list आपको दिखा दूंगा कौन सी कंपनी कितना पैसा दे रही है, उसमें ज्यादा मजा आता है हमें, ठीक है? तो that is there. Next, very important and the last role where a lot of companies and areas you will find is the banking companies which are coming to the campus. ये चार कैटेगरी में ही कंपनीज बैठेगी कैंपस में, राइट? द लास्ट इज बैंकिंग कंपनीज. इसको ट्रायंगल बनाते हैं अपन. आ जाइए लास्ट पे. ट्रायंगल बैंकिंग कंपनीज. बैंकिंग कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज आर पार्टिसिपेटिंग इन द कैंपस गाइस दिस टाइम? लेट्स सी if you have gone through the list or if you have not gone through it, no problem, we are going here now. The first you can see ICICI Bank is there. Second, you could see HSBC Bank is there. HSBC Bank will be mostly hiring for IB back office role, which I can know. Right? इसका पैकेज थोड़ा सा ज्यादा रहेगा. अप्रोक्सीमेटली आई रिमेम्बर लास्ट टाइम इनका 15 प्लस का पैकेज था. ठीक है, ये IB बैक ऑफिस के लिए हायर करते हैं मोस्टली. देन यू वुड सी एक्सिस बैंक. एक्सिस बैंक which is there. Right, these are the banks mostly. I am just finding it out. Right, हाँ, उसके अलावा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक. Standard Chartered Bank is coming to the campus. Right, these are the four major banks you would see are coming. ये तीन बैंक एक कैटेगरी के हैं, ये थोड़ा अलग कैटेगरी हो जाता है which is IB. ठीक है, we had already a separate session on investment banking. If you are interested, don't forget to check my YouTube playlist. Then you'll get to know the IB session. Now let's move forward. कि सर ये बैंक्स में क्या रोल्स ऑफर होते हैं, ध्यान से देखिएगा, लिखिएगा प्लीज. The roles which are offered by the banking companies, which you'll find here, is majorly divided into three. First is your relationship manager. Relationship manager. अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट अपडेट, बैंकिंग का जब सैलरी और ऑफर लेटर मिलेगा ना गाइस, राइट, इसमें एक चीज चेक कर लेना कि CTC में दे हैव इंक्लूडेड लोन और नॉट. काफी बार ये लोग CTC बोलते हैं 12 लाख का, बट वो 12 लाख नहीं होता है. उसमें 1 लाख का वो इंटरेस्ट फ्री लोन रहता है गाइस. आई रिपीट, दिल गिव यू 1 लाख ऑफ अ इंटरेस्ट फ्री लोन. ठीक है, तो एक्चुअल में आपका सैलरी 12 लाख नहीं है, 11 लाख है. ऑफर लेटर ढंग से पढ़ेंगे बेटा. अगेन आई रिपीट, ऑफर लेटर ढंग से पढ़ेंगे, नहीं तो हो जाएगा धोखा, या आजकल की भाषा में इसको कहते हैं मोए मोए.
ठीक है, इफ यू डोंट रीड ऑफर लेटर केयरफुली आपका मोए मोए कर देगी कंपनी। ठीक है, तो प्लीज रीड इट केयरफुली। तो फर्स्ट रिलेशनशिप मैनेजर, सेकंड आपका रोल मिलेगा क्रेडिट मैनेजर का, एंड थर्ड रोल मेजरली आपको मिलेगा ट्रेजरी में, राइट। समटाइम्स दे माइट हैव हायरिंग फॉर इंटरनल ऑडिट एज वेल, राइट। ये तीन चार रोल्स में आपको मेजरली वैकेंसीज दिखेगी। नाउ व्हाट इज अ रिलेशनशिप मैनेजर इन अ कैंपस प्लेसमेंट्स, ये चार पांच रोल दिखेंगे। रिलेशनशिप का मैनेजर का काम होता है ब्रिंग बिजनेस, आसान भाषा में बोले टू ब्रिंग बिजनेस, धंधा लाना, रिश्ते बनाना और धंधा लाना, राइट। यू नीड टू create a good bond with the people out and bring the business. That is the role of a relationship manager. Credit manager का काम क्या है? जो धंधा लाया है उसे अप्रूव करना। एग्जाम्पल देता हूँ बढ़िया सा। Imagine that CMONG decided to scale its venture, right? And I wanted 100 crore of rupees to scale my venture. तो ICICI बैंक का रिलेशनशिप मैनेजर comes to me and saying that सर आपको पैसा चाहिए। मैं बोला हाँ, आई नीड मनी। तो रिलेशनशिप मैनेजर ने धंधा लाया। बट डू यू थिंक अ बैंक विल गिव मी अ मनी लाइक दिस ओनली? मैं विजय माल्या हूं क्या? नहीं ना। हाँ, तो ऐसे तो नहीं देगी। तो मेरे से कोलेट्रल लेगी, सिक्योरिटी लेगी, प्रोजेक्शन रिपोर्ट लेगी, राइट, हिस्टोरिक ट्रांजैक्शन और हिस्टोरिक रिपोर्ट लेगी, बैंक स्टेटमेंट चेक करेगी, क्रेडिट स्कोर देखेगी, सिबिल स्कोर देखेगी। ये सब कौन देखेगा? क्रेडिट मैनेजर। ठीक है, तो दिस इज अ रोल इन अ बैंकिंग। थर्ड ट्रेजरी, ऑफ कोर्स पैसा सबसे ज्यादा बैंक के पास है, तो बैंक नीड टू इन्वेस्ट दिस मनी। दे नीड टू सी वेदर द मनी इज इन्वेस्टेड एट राइट प्लेस और नॉट। हु विल डू दैट? ट्रेजरी का। एंड इंटरनल ऑडिट सभी को पता है क्या होता है। दिस आर द फोर मेजर रोल्स व्हिच आर ऑफर्ड इन अ बैंकिंग कंपनीज, जो कि कैंपस में आ रही हैं, राइट। बट वन थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इन अ कैंपस, अगर आपको पता है कि नहीं, यू विल बी शॉर्टलिस्टेड बाय मेनी कंपनीज बट यू कैन ओनली गिव अ कंसेंट टू फोर कंपनीज। सिर्फ आप चार कंपनीज को कंसेंट दे सकते हैं, दैट इज वन। सेकेंड बैड थिंग अबाउट अ कैंपस विच आई डोंट लाइक, एंड दैट इज कंपनीज शॉर्टलिस्ट यू हियर, यू डोंट शॉर्टलिस्ट अ कंपनी। हाँ 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 हाँ, कंपनीज आपको शॉर्टलिस्ट करेंगी, आप कंपनी को शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे। सर मतलब आईटीसी इज कमिंग टू द कैंपस और मेरे को आईटीसी का इंटरव्यू देना है, बट डज दैट मीन दैट आईटीसी विल शॉर्टलिस्ट? नहीं, आंसर इज नो। आईटीसी आपको शॉर्टलिस्ट करेगी, आप उसे शॉर्टलिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, फिर ये तो फिर वन साइडेड बात हो गई। हाँ बेटा, लाइफ में काफी सारी चीजें वन साइडेड होती है। ठीक है, तो दैट इज देयर। तो सर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं है, इसका सॉल्यूशन एक ही है, एंड दैट इज प्रिपेयर वेल एंड ऑल्सो अप्लाई ऑफ कैंपस। आई रिपीट, प्रिपेयर वेल एंड अप्लाई ऑफ कैंपस। ठीक है सर, तो क्या कैंपस के भरोसे बैठे और 100% जॉब लग जाती है कैंपस में? हाँ, क्या कैंपस के भरोसे हम बैठे रहे और 100% जॉब लग जाती है कैंपस में? मैं कुछ नहीं कमेंट कर सकता इस पे। इस पे कमेंट करेगा आईसीएआई। कैसे सर? आपको डेमो दिखाना पड़ता है बार बार। देखिएगा, आपको डेमो दिखाते हैं। ये आईसीएआई का पिछले कैंपस का स्टेटिस्टिक्स है। पिछले कैंपस का स्टेटिस्टिक्स ये बोलता है 10,000 कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए थे, 169 कंपनीज हैव केम, 3,395 candidates got a offer letter from a companies, out of which 2,385 students have accepted the job offer from company. सिर्फ 2,300 लोगों ने ऑफर एक्सेप्ट किया। ज्वाइन कितने ने किया वो भी नहीं पता। ओ हेलो, there's a difference between acceptance and joining. तो how many people got placed indirectly from campus? 23। 23% लोगों को जॉब मिली है। आई एम नॉट मेकिंग यू स्केयर, आई एम जस्ट मेकिंग यू अवेयर। बिकॉज काफी सारे लोग ये बिलीव में रहते हैं कि कैंपस से 100% जॉब लगती है। नहीं, राइट। अगेन देयर इज गोना बी अ, ये मेरा नहीं है ब्रोशर, ये आईसीआई का है। देखिए भैया, आईसीआई का लोगो भी है यहाँ पे। ठीक है, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस हियर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर करियर नाउ इज योर प्रिपरेशंस। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज कंपटीशन इज ऑन। है, कंपटीशन है, आपको फील नहीं हो रहा बट है, राइट। So for that, you need to ensure that you are the best. Yes. Now let us move and understand more detail कि कौन कौन सी कंपनीज और आ रही हैं। तो ये अपने पूरा एक फाइल बनाया हुआ है। आई थिंक मैंने मेजर कंपनीज कवर कर ली है।
एक्सेंचर सॉल्यूशन बता दिया, वेदांता बता दिया, ईवाई बता दिया, अदानी बता दिया, एचएसबीसी बता दिया, एक्सिस बैंक बता दिया, केजीएस बता दिया, ये सब बता दिया। I've got most of the companies which are there which are coming to the campus। अब बात करते हैं पैसे वाली कंपनीज। ऐसी कंपनीज बताइए जो कैंपस में आ रही है और वो 15 लाख से ज्यादा का पैकेज दे रही है। दिस आर द कंपनीज विच आर कमिंग टू द कैंपस एंड विल बी ऑफरिंग अ पैकेज मोर देन 15 लाख। राइट, वेदांता, आईओसीएल, एचएसबीसी इंडिया, एक्सेंचर, आईटीसी, बॉश, रिलायंस, मीशो, लॉरियल, राइट, और ये दिस इज अ लीकर कंपनी एंड डी शॉप, एंड दिस आर द कंपनीज व्हिच आर गोना बी कमिंग टू कैंपस एंड ऑफरिंग अ ह्यूज पैकेज। बाकी अगर फिर हम सेकंड कैटेगरी की कंपनी की बात करें, दोस्तों ऑफरिंग अ पैकेज ऑफ 12 to 14 लाख। एसआर बॉटली बॉय, अदानी, जेएसडब्ल्यू स्टील, पीडब्ल्यू सी, एचडीसी, कॉबेट, राइट, यू कैन सी द लिस्ट, राइट, ज्यादा बड़ी नहीं है बट दिस इज देयर। फ्लिपकार्ट इज ऑल्सो कमिंग टू द कैंपस। ठीक है, तो इफ यू नीड आई शेयर दिस फाइल विथ यू गाइस इन आर इन द कम्युनिटी ग्रुप। ठीक है, डन। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा सर, अब ये बताओ। एक आइडिया मिल गया गाइस, आई होप यू गॉट अ क्लैरिटी कि कंपनीज क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। अभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे, टेंशन ना लो। राइट, यस, नो, नो, यस। थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी मिल रहा है क्या होगा कैंपस में, विच ऑल कंपनीज आर गोना बी कमिंग, व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेक्टेशन इज देयर, व्हाट टाइप ऑफ रोल इज गोना बी देयर। आई वांट यू टू पार्टिसिपेट। फटाफट बोलो यस और नो इन द चैट। योर एनर्जी विल डिफाइन माय एनर्जी। अरे बोलो ना, मजा आ रहा है कि नहीं सेशन में गाइस? यस और नो इन द चैट प्लीज। है ना? और वीडियो बंद करने वाले लोग वीडियो ऑन कर लीजिए। हमें आपके चेहरे देखने हैं, हमें अच्छा लगता है कि ये लोग को देखने को, हमें बहुत खुशी मिलती है। सच्ची, सच्ची खुशी मिलती है, बबीता जी की कसम। बबीता कौन? जेठालाल की क्रश। जेठालाल कौन? तारक मेहता वाला। हाँ हाँ, यस, ओके, यस। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? सर अब क्या करें, ये कंपनीज तो आ रही है कैंपस में, राइट? अच्छा, कोई कह रहा है नेशनल क्रश है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते बेटा। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप व्हिच यू नीड टू डू गाइस? द नेक्स्ट स्टेप व्हिच इज इंपॉर्टेंट हियर इज कि आपको कुछ कुछ चीजों का प्रिपरेशन करना जरूरी है। सबसे पहला, यू नीड टू प्रिपेयर वेल योर रिज्यूमे। आपको आपका रिज्यूमे प्रिपेयर कर लेना चाहिए। आफ्टर यू प्रिपेयर दिस, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका प्रूफ रीड भी होना चाहिए। राइट, प्रूफ रीड साथ में। प्रूफ रीड करवाना है तो हमारी एक वेबसाइट बनी हुई है tools.cmong.com, पता है कि नहीं? एआई बेस्ड वेबसाइट है, इसमें आपको फीडबैक भी मिल जाएगा फ्री में। फिर से बोलो, फ्री में। हाँ जी, हाँ जी, फ्री में। यस, तो यू कैन गो देयर, दिस वेबसाइट विल गिव यू फीडबैक ऑन योर रेज्यूमे। बहुत ही शानदार वेबसाइट बनी है। डेमो चाहिए तो दिखाऊंगा, हर चीज का डेमो दिखा सकते हैं अपन। नेक्स्ट, आफ्टर दिस इज डन, आपको टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनीज लाइक रिलायंस, कंपनीज लाइक विप्रो टेस्ट कंडक्ट करेगी, एलएनटी भी टेस्ट कंडक्ट करेगी। कौन सी टेस्ट? एप्टीट्यूड टेस्ट, लॉजिकल रीजनिंग टेस्ट, वर्सेंट टेस्ट, कम्युनिकेशन टेस्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा। दैट इज देयर। नेक्स्ट, यू नीड टू प्रिपेयर फॉर जीडी विच इज ग्रुप डिस्कशन। जैसे वेदांता जीडी कंडक्ट करने वाली है, दैट इज फॉर श्योर। अगर ऑफ कैंपस अप्लाई किया है तो नारायणा हेल्थ केयर जीडी कंडक्ट करने वाली है। After this is done, very important, you need to prepare for some HR questions, which is where do you see yourself 5 years down the line, right? Introduction, right? What are your strengths and weaknesses? ये सब आपको prepare करना पड़ेगा HR questions. Then, most important, which is related to your technicals and deciding a domain which is there, ये आपको decide करना पड़ेगा। ठीक है, टेक्निकल बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल क्लियर नहीं किया, यू विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्टेड गाइस। यू नीड टू प्रिपेयर योर टेक्निकल्स वेरी नाइसली। इसके साथ साथ आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज करनी है, ये तो कैंपस के लिए हो गया, आपको ऑफ कैंपस प्रिपेयर करना है गाइस, बिकॉज आई टोल्ड यू स्टेटिस्टिक्स एंड द डेटा। ऑफ कैंपस में क्या क्या लगेगा? आपको लिंक्डइन प्रोफाइल तगड़ी बनानी पड़ेगी। यू शुड नो हाउ टू यूज द लिंक्डइन एंड फाइंड आउट द जॉब्स फ्रॉम लिंक्डइन। सेकेंड, आपको नौकरी पे बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा, राइट, नौकरी पोर्टल पे, और वहां पे भी जॉब्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑफ कैंपस एप्लीकेशन इज अगेन पैरेलली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ टू डू दिस यू ऑलवेज हैव टू चॉइस, है ना? इसी फाइनल में भी आपके पास चॉइस थी, राइट? आपके पास दो चॉइसेस रहती है। फर्स्ट, या तो आप खुद से करें, राइट, यू डू इट ऑन योर ओन, या सी ए फाइनल स्टडीज यू डू इट ऑन योर ओन, राइट, और सेकंड, यू टेक द हेल्प ऑफ पीपल, है ना? मुझे नहीं पता आपने सीए फाइनल में क्या किया था, या तो आपने खुद से पढ़ा होगा, या तो आपने किसी फैकल्टी की क्लासेस ली होगी या लेक्चर देखे होंगे। सेम वे सब जगह यही है, राइट? यू कैन प्रिपेयर ऑन योर ओन, यू नो द प्रोसेस व्हिच आई हैव टोल्ड यू, बट इफ यू नीड अ हेल्प,
वी आर देयर टू हेल्प यू आउट, राइट. हमारा ट्रेनिंग वर्कशॉप चलता है विद द नेम ऑफ GIR. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज वी हैव कंप्लीटेड 52 बैचेस टिल नाउ. 52 बैचेस हो गई है. वी हैव ट्रेन्ड मोर देन 10,000 प्लस CAs, राइट. नेक्स्ट थिंग, यू नेम द कंपनी, वी हैव स्टूडेंट्स आउट देयर. जो भी कंपनीज कैंपस में आ रही है, हर कंपनी में अपने बच्चे हैं, राइट. एंड द करिकुलम ऑफ आवर बैच इज प्रिपेयर्ड इन सच अ वे दैट इट कवर्स एवरीथिंग विच इज नीडेड टू गेट इनटू कंपनीज. जैसे कि दिखाता हूं आपको करिकुलम एक सेकंड के लिए, राइट. तो दिस इज अ करिकुलम ऑफ योर बैच विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे 29th, राइट. इफ इट इज गॉन, नेक्स्ट बैच अब आएगी 12 फरवरी को. इफ यू डोंट ज्वाइन दिस, नेक्स्ट बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 20th of February, राइट. क्या क्या कवर्ड होगा? विल कवर रेज्यूमे. योर रेज्यूमे इज गोना बी रिव्यूड. विल टेल यू हाउ टू प्रिपेयर अ रेज्यूमे बेस्ड ऑन डोमेन वाइज, राइट. मेंटर आएंगे, पर्सनली रिव्यू करेंगे. Then we'll teach you how to prepare and use a LinkedIn, how to apply a job on LinkedIn and Naukri. Then we'll have a pre-screening call. Many times you get a call from HR saying that how many attempts you have taken. उसको answer कैसे करना, right? Very important. HR questions will cover it. And most important, if you see, we are focusing so much on a domain-wise guidance session. Will help you decide a domain which is a domain for you. Because I can bet it out openly. Whatever domain you have worked in your articleship, you don't want to work there now. आर्टिकलशिप में आपने स्टार्ट ऑडिट में काम किया होगा तो आप बोलते हो कि आप स्टार्ट ऑडिट नहीं होगा मेरे से. हंसो मत, सच है ये. आई नो यू गाइस वेरी वेल. एंड दैट इज व्हाई वी आर गोना बी हेल्पिंग यू टू डिसाइड अ डोमेन. एंड वंस यू डिसाइड अ डोमेन, बहुत ध्यान से सुने, एक बार डोमेन डिसाइड हो गया, आप डोमेन के मेंटर के साथ बैठोगे. जैसे कि रजनीश देसाई, ही इज अ पार्टनर, एक्स पार्टनर ऑफ KPMG, उनके साथ आप सेशन लोगे, राइट. जैसे कि आपने बैंकिंग डिसाइड किया तो बैंकिंग के लिए रजनीश रॉय सर है, जिनका 20 साल का अनुभव है, राइट. से फॉर एग्जाम्पल डिसाइड इंटरनल ऑडिट, तो आप डायरेक्टर ऑफ इंटरनल ऑडिट के साथ बैठोगे, राइट. तो दे विल हैव अ क्लोज एंडेड सेशन विद स्मॉलर ग्रुप्स. और से फॉर एग्जांपल यू डिसाइड डायरेक्ट टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स के डायरेक्टर KPMG के साथ आप बैठोगे. जैसे हर एक डोमेन के मेंटर्स आप देख सकते हो जो ज्वाइन करते हैं हमारे वर्कशॉप में. आफ्टर दैट इज डन, एक बार ये चीज हो गई, डोमेन डिसाइड हो गया, डोमेन में बैठ लिया, सर बट माई आर्टिकलशिप इज डमी और आई डोंट हैव गुड कम्युनिकेशन और आई एम नॉट एबल टू रिकॉल माई स्टार्ट ऑडिट एक्सपोजर. आपको एक फ्री मास्टर क्लास मिलेगी उस डोमेन की विच इज गोना बी अप्रोक्सीमेटली 20 आवर्स, जिसमें आपको चीजें टेक्निकली, प्रैक्टिकली विल टीच यू. इज इट इंक्लूडेड इन द पैकेज? द आंसर इज यस, इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द पैकेज, राइट. तो आपने एक बार डोमेन डिसाइड कर लिया, मेंटर के साथ बैठ गए, राइट, इन अ ग्रुप. एंड आफ्टर दैट इज देन आपको टेक्निकल भी मिल गया उसका, इंक्लूडिंग रीडिंग मटेरियल. देन विल टीच यू ईमेल राइटिंग, कवर लेटर, हाउ टू निगोशिएट अ सैलरी. बनिया बुद्धि लगाए, राइट. अगर 10,000 भी सैलरी बढ़ गई इस सेशन को देख के, एक सेकंड दीजिए. Even if after just watching a session on a salary negotiation, and if your salary increases by 10,000, right, your batch fees is recovered 2x. है ना? And trust me, it is going to be happening because we are into this industry for very long, so we know in and outs of this. Next, we'll practice a lot of mock interviews. We'll have GD sessions with mentors. एक सेकंड, okay, हाँ. We have a GD sessions with mentors. I think wire lose हो गया, हाँ. So we have GD sessions with mentors, and after that is done, the best thing is that every one of you will get a one of the personalized mentor for one-on-one counseling. मतलब क्या, आप सभी को एक पर्सनल खुद का मेंटर मिलेगा जिसके साथ आप 30 मिनट्स का मॉक इंटरव्यू बुक करोगे, राइट. तो दैट इज गोना बी टेकन केयर ऑफ. इसके साथ साथ हमारे इसमें AI बॉट बनाए हमने, उसके लिए आपको एडिशनल कॉइन्स भी मिलेंगे. एक मास्टर क्लास मैंने बता दिया, वन-ऑन-वन काउंसलिंग बता दिया. एवरी अल्टरनेट डेज वी हैव अ डाउट सॉल्विंग सेशन till the time you get placed into your company. मतलब बोलने के लिए बैचेस फॉर 11 days, बट सपोर्ट आपको तब तक देंगे जब तक कि आप अपनी कंपनी में नहीं जाते हो. यहाँ पे भी खत्म नहीं हुआ है. डोमेन वाइज व्हाट्सएप ग्रुप एंड मेंटर्स ग्रुप इज देयर, प्लस गाइडेंस फॉर ICAI कैंपस प्लेसमेंट, इंक्लूडिंग अ कंपनीज वाइज गाइडेंस. तो अगर 4 कंपनी ने आपको कैंपस में शॉर्टलिस्ट किए, 4 कंपनी के मेंटर आपके सामने बैठे रहेंगे, वो आपको गाइड करेंगे कि कैसे प्रिपेयर करना है. तो दैट इज एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ, right from basic preparation till technical preparation till getting into the companies. But the only thing which is needed here, you need to put in efforts, because हम होमवर्क भी देते हैं, हम आपको डंडा भी मारते हैं. अगर आप होमवर्क नहीं करते हो तो आपको डांट भी पड़ेगी. अगर आप सीरियस हो तो ही आना, सीरियस नहीं हो तो भैया आप खुद से करिए. बिकॉज हमारा रूल है कि हमारे अगर जो बच्चे आते हैं वो सिलेक्ट, हम कोशिश जी जान लगा देते हैं to put them into the best companies of the world. All right, that is what we have done, right?
अभी तक के 52 बैचेस हो गई हैं। इस अटेम्प्ट में वी स्टार्टेड विद 48th बैच, 48, 49, 50, 51, 52, 5 बैचेस इस अटेम्प्ट की हो गई है। 3 बैचेस और होने वाली है। राइट, इफ यू मिस दिस बस, द नेक्स्ट बैच आएगी सीधा 12th फरवरी को। सर, हाउ डू यू रजिस्टर? लास्ट टाइम यू कैन गो टू आवर वेबसाइट samong.com। यहाँ पे आप जा सकते हो, ऊपर जाइए। राइट, यहाँ पे आपको मिल जाएगा इंटरव्यू ट्रेनिंग कोर्स। वंस यू गो हियर, यू कैन जस्ट स्क्रॉल इट डाउन। यू विल फाइंड आउट 2 बैचेस, 53rd एंड 54th। टाइमिंग इज 7 AM to 10:30। 10 दिन का बैचेस है, विच इज रिटर्न हियर। द फीस इज 4299 प्लस 18% GST, विच इज निर्मला सीतारमन जी की हक। राइट, तो विच इज अप्रोक्सीमेटली 5000 रुपीज। बट ट्रस्ट मी, ऑन द लास्ट डे ऑफ अ बैच यू विल से दैट कि सर फीस आपने बहुत कम लिया है, because that also includes your master classes, counseling sessions, and guidance which is there. Right, so request, if you're interested, request you to please register for it because seats are limited. Right, अभी सीट्स कम ही बची है और बैच स्टार्ट हो रही है 29 से। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड है, you can put your queries or doubts in the chat also later on, but I've shared the link in the chat, those who are interested. अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप लिंक जरूर चेक कर लीजिए एक बार। बिकॉज मैं एक चीज बता रहा हूँ, योर इंटरव्यू प्रिपरेशन कैन नॉट बी लेफ्ट टू समथिंग एल्स, बिकॉज इट्स योर करियर गाइस। राइट, आपका करियर है। अच्छा, और एक और इंपॉर्टेंट चीज, एंड दैट इज इफ यू आर सीरियस देन ओनली कम। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप सीरियस हो अपने करियर को लेकर तो ही आना। अगर सीरियस नहीं हो, अगर आपको और भी चीजें करनी है लाइफ में कि घूम के आते हैं सर मजाक मस्ती करेंगे, नहीं, वो नहीं होता हमारे बैच में। मतलब होता है, ऐसा नहीं है, आई डू क्रैक द जोक, आई एम गुड एट दैट, डोंट वरी, आई एम एनीवेज अ स्टोरी टेलर। बट यस, दैट डज नॉट मीन दैट कि वहां पे टाइम पास होगा और ये सब चीजें होगी। बहुत सीरियसली हम आपके करियर को लेते हैं, बिकॉज योर परफॉर्मेंस डिफाइंस माई परफॉर्मेंस एंड आई केयर अबाउट माई परफॉर्मेंस। ठीक है, तो दैट इज देयर। यस, सो लिंक मैंने चैट पे शेयर कर दी है, जो भी इंटरेस्टेड है, डू नॉट फॉरगेट टू रजिस्टर एंड डोंट हेजिटेट। राइट, दैट इज वन। Second, one more important thing, which is about upcoming sessions, which is there. जैसे अभी विप्रो का कोहोर्ट्स प्रोग्राम है, उसका प्री प्लेसमेंट टॉक इज ऑन ट्यूसडे, वो ग्रुप पे आ जाएगा। इसके अलावा कल एक नेटवर्किंग सेशन रखा है आप सभी के लिए, वहां पे आप आइए, यू इंटरेक्ट एंड मीट न्यू पीपल। बिकॉज वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, एंड दैट इज 80% ऑफ द जॉब्स आर गोना बी फिल्ड वाया रेफरेंसेस। आई रिपीट, 80% जॉब्स रेफरेंसेस से फिल होती है। तो आपको दोस्त चाहिए जो आपको पुश कर सके। तो जीआर में आपको कम से कम 10 दोस्त तो मैं बनवा के दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, दैट इज देयर। तो व्हाट यू नीड इज अ रेफरेंसेस। कल के सेशन में हमारा नेटवर्किंग सेशन है, वहां पे आप आइए, 2 से 4 का रहेगा, बहुत मजा आएगा। विल लव, विल इंटरेक्ट, विल टॉक टू लॉट ऑफ पीपल। ठीक है, वन मोर क्वेरी विच इज देयर, सर इज द बैच इज गोना बी इन इंग्लिश? द आंसर इज yes, because we need to prepare for our interviews in English, so batch is going to be in English, which is there. Great. Now I'm opening up a forum for all of you guys, those who are here. Right, you can put your doubts in the chat. Right, आपको जो भी डाउट्स है तो आप बेझिझक होके चैट पे डालिए। राइट, बिकॉज द सेशन इज फॉर यू, आई वांट टू टॉक टू यू, व्हाट एवर डाउट यू हैव। सर इसका ऐसे है, ये कंपनी का इंटरव्यू है, ये चीज कैसे होगी, आप पूछिए। राइट, तो मैं एक ही जगह चैट एनेबल कर रहा हूँ, विच इज ऑन यूट्यूब, ताकि एक कंसिस्टेंसी बनी रहे। बिकॉज 2 जगह चैट एक साथ एनेबल कर देते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो जो जूम से कनेक्टेड है, अगर आपको डाउट्स है तो यूट्यूब लाइव पे जाइए, प्लीज डाउट्स डाल दीजिए वहां पे। और जो यूट्यूब वाली जनता है, एनीवेज आप वहीं पे हो, तो आप भी डाउट्स डालिए, आपके डाउट्स कवर करना चाहते हैं। जो भी डाउट्स है, एनीथिंग रिलेटेड टू इंटरव्यूज, एनीथिंग रिलेटेड टू एनी क्वेश्चन व्हिच इज देयर, राइट, जो भी है प्लीज पूछिए, हेजिटेशन नहीं रखना। यस, आई एम वेटिंग फॉर द डाउट्स, वट एवर डाउट्स यू हैव यू कैन पुट इट आउट। सर टिल नाउ, someone is saying, sir, till now our competition was with CA students. Now with a qualified CS, our competition it's gonna be tougher even. The answer is yes. Competition तो अब हमेशा रहेगा लाइफ में दास। सर ओवरसीज कैंपस प्लेसमेंट दिस टाइम, इसके अलावा देयर गोना बी अ सेपरेट कैंपस प्लेसमेंट जो होता है ओवरसीज का। उसका लिंक आईसीआई जब आएगा तब मेरे यूट्यूब पे सेशन आ जाएगा। कैन वी एडिट अ रेज्यूमे इन अ कैंपस नाउ? एक बार मेल कर दो आईसीआई को, व्हिच इज देयर। वैसे अभी तो एडिट नहीं पॉसिबल है। क्या एक्सिस बैंक में 3 अटेम्प्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं? इतना टेंशन मतलब मोस्टली कर लेते हैं। शुड आई मेंशन द कंपनी नेम इन माय रेज्यूमे? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर कंपनी नेम डालना चाहिए कि नहीं, अगर अच्छे ब्रांड से, अच्छी कंपनी से तो डाल दो। राइट, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। सर डू वी गेट अ जॉब डिस्क्रिप्शन व्हेन वी गेट शॉर्टलिस्टेड? द आंसर इज यस लोकेश जी, आपको जेडी मिलेगा। कंपनी विल टेल यू फॉर व्हाट जेडी दे आर गोना बी हायरिंग।
What type of questions are asked in R2R role? Process related questions, and they'll ask you basic accounting entries, जैसे प्रोविजन की एंट्रीज पूछ लेंगे, प्रोविजन क्यों बनाते हैं पूछ लेंगे, राइट, बीआरएस क्या होता है ये पूछेंगे, राइट। तो आप मेरा क्वेश्चन बैंक देखिए, क्वेश्चन बैंक आपको वेबसाइट पर बता दिए कहाँ मिलेगा, वहां पे आप देख लीजिएगा जरूर। Someone is asking कि कैन वी गेट अ रिकॉर्डेड क्लासेस? सुमित जी, आप जीआर ज्वाइन करते हैं तो हर एक सेशन का रिकॉर्डिंग मिलता है, बट जीआर एक लाइव है, इंटरव्यू प्रिपरेशन कैन ओनली बी डन ऑन अ लाइव एनवायरनमेंट। कुछ लोगों को लगता है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो देख के प्रिपेयर कर लूंगा, आप गलत सोच रहे हो। जब तक कि आपको फीडबैक नहीं मिलेगा तब तक आप प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। ये क्लासेस नहीं है, ये प्रिपरेशन है। और प्रिपरेशन तब होगा जब बोलोगे, कम्युनिकेशन तब इंप्रूव होगा जब बोलोगे। आई पे गेटिंग इट? यस। तो व्हाट्सएप ग्रुप लिंक यूट्यूब के कम्युनिटी डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, राइट, वहां पे आपको मिल जाएगा। इंटरमीडिएट के अटेम्प्ट से फर्क पड़ेगा, इंटरमीडिएट का इतना मत सोचिए। शुड आई मेंशन द कंपनी नेम इन द रेज्यूमे? आई हैव कवर्ड दिस। सर, कैन यू प्रोवाइड अ गाइडेंस फॉर आईबी टू क्रैक अ इंटरव्यू फ्रॉम स्क्रैच? दोस्त, आईबी का एक यूट्यूब पे सेशन डला हुआ है, लाइव सेक्शन में जाइए, हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईबी, वो देख लीजिए दोस्त। सर, आई हैव अ इंटरव्यू इन एचयूएल ऑन ट्यूसडे, हाउ टू प्रिपेयर इफ आई हैव रजिस्टर्ड नाउ जीआर बैच? तो आई, अगर आपका एचयूएल का इंटरव्यू है आयुषी जी, राइट, तो हमारे कोर्सेज में काफी सारे कंपनी वाइज मेंटर्स के सेशन रिकॉर्डेड है कि इस कंपनी के इंटरव्यू में क्या चीज पूछते हैं, राइट। तो वो चीज है, प्लस इसके साथ साथ अगर कोई कंपनी स्पेसिफिक इंटरव्यू होता है तो हम मेंटर से आपको कनेक्ट करवा देते हैं, तो दैट इज देयर आयुषी, बिकॉज हमारे स्टूडेंट हर एक कंपनी में है, तो हम आपको रेफरेंस दे देते हैं कि स्टूडेंट से बात कर लो। तो वो आयुषी जी, उसमें आपको हेल्प हो जाएगी, उसका आप टेंशन मत लीजिए। But I want to get into indirect tax domain, but if I do not get shortlisted for the same domain, do I need to prepare for other domains also? The answer is yes. You need to also prepare for one or two multiple domains, which is there, and that is very important. Should we put a photo on our resume? The answer is no. Photo is not needed on a resume. Sir, will any company be shortlisted if a candidate is passing with the 15 attempts? Right. एक चीज ध्यान रखना है, सिर्फ आप कैंपस के भरोसे ना बैठे, ऑफ कैंपस भी कोशिश करते रहे गाइस, दैट इज व्हाट आई से। विप्रो जीएफएल में 55% से कम नहीं आया है तो अप्लाई करूं? बिल्कुल अप्लाई करिए। विल सीएफए लेवल 1 गिवन एज इन शॉर्टलिस्टिंग? वेरी फ्यू, बट थोड़ा बहुत एज मिलेगा, थोड़े लेवल पे मिलेगा। डू वी गेट अ जॉब लोकेशन व्हेन वी आर शॉर्टलिस्टेड बाय द कंपनीज? द आंसर इज यस मनीष जी, आपको जॉब लोकेशन मिलेगा। सर, इफ आई गेट ऑफर लेटर बिफोर द कैंपस देन व्हाट डू आई डू? यू नीड टू टेल द कंपनीज कि यू विल बी ज्वाइनिंग लेट, दैट इज व्हाट यू कैन डू, जस्ट देयर। नेक्स्ट, सर, नो कंपनी शॉर्टलिस्टेड येट, व्हाट टू डू है? बेटा, शॉर्ट लिस्टिंग तो हुई नहीं है अभी, 7th को शॉर्ट लिस्टिंग होगी, तुम अभी से कहा देख रहे हो। दीपक कह रहे हैं हाउ टू चूज अ मास्टर क्लास विद जीआर बैच? आपको बेटा पहले डोमेन वाइज गाइडेंस सेशन लो, मेंटर से इंटरेक्ट करो, फिर आपको बैच चूज करने मिलेगा, जैसे है ना। तो ऐसे ऐसे इलेक्टिव जो होता है ना, जैसे आपने सीए फाइनल में था, राइट, बस वैसा ही है। नेक्स्ट, स्टार्ट ऑडिट में क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन के अलावा जो कंटेंट है वो भी कवर करना है क्या? प्लीज रिप्लाई करें। द आंसर इज यस, वो भी आपको पढ़ना है दोस्त। डू कंपनी शॉर्टलिस्ट ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स? द आंसर इज यस टू सम एक्सटेंट, बट यू नीड टू हैव अ वेरी गुड स्टोरी टू टेल। आपको कहानी बेचते आना चाहिए, इंटरव्यू इज ऑल अबाउट सेलिंग योरसेल्फ, है ना। तो वो हम आपको सिखाएंगे वर्कशॉप में आओगे तो, राइट। व्हाई डू कंपनी मेंशन अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ सीएस? अब कुछ कंपनी का रहता है, वो तो आप नहीं कर सकते। व्हाट इज योर व्यू ऑन कंपटीशन इन दिल्ली सेंटर फॉर एज अ फ्यू कंपनीज आर कमिंग? मतलब इट्स ओके, राइट, यू नीड टू बी द बेस्ट, इफ यू आर द बेस्ट यू विल फाइंड योर प्लेस। पर इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम है, अमित जी, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन अगेन गो टू आवर वेबसाइट tools.cmonk.com. there's a communication bot also created by us, if you don't know. It's one of the best bot which is going to be helping you to improve your communication. Multiple attempts shortlisting होगी क्या? हाँ, मतलब hope for the best, fingers crossed. Orientation attend करना चाहिए? The answer is yes, you'll go and meet lot of new friends which is there. Sir, some of my friends have attended campus earlier and have said that some of the companies are not taking interview properly. मतलब होता है कभी कभी, ठीक है। Do EY direct tax people shortlist for 5 attempts? You hope for the best, but again, I can say you can try off campus. Do how to prepare for HUL AI based interview? Ritika, again, I'll help you connect with the mentor if needed. Indirect taxation domain में growth है क्या फ्यूचर में? The answer is yes. देखो, इनडायरेक्ट टैक्स 3 पार्ट होता है, कंप्लायंस, लिटिगेशन एंड एडवाइजरी, है ना। कंप्लायंस ऑटोमेट हो जाएगा कुछ सालों में, लिटिगेशन और एडवाइजरी में बहुत पैसा है, तो वहां पे आप ट्राई कीजिए, दैट इज देयर। व्हाट आर मेजर क्वेश्चंस बी ऑन आवर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस? द आंसर इज यस, अकॉर्डिंग विद दिस दे विल आल्सो आस्क यू अबाउट टेक्निकल्स। व्हाट एवर डिसेबल कैंडिडेट्स? पायल जी, काफी सारी पीएसयूज आपको एज देगी, तो डिसेबल कैंडिडेट्स को एक एज मिल जाता है। सर, अगर
अगर अभी कोई कंपनी हमें रिजेक्ट कर देती है तो कैंपस में पिक कर सकती है क्या? हाँ, तो इतना मत सोचो, अभी आप पहले अप्लाई करिए तब आप सोचिएगा। So my degree certification was given in 2012 and due to late submission, but resume filing details I mentioned the academic year and the problem after the session। नहीं समझ में आया? थोड़ा डिटेल में बताइए। जीआर बैच कितने बजे तक ओवर होती है डेली? बेटा वो हम लोग कोशिश करते हैं कि वो टाइमली खत्म हो जाए, बट कभी कभी क्या होता है कि सेशन बहुत अच्छा चलता रहता है ना, तो हम लोग उसको 11 तक खींच लेते हैं, है ना? तो दैट इज देयर। इतना टेंशन मत लो भाई, हर एक चीज विल ट्राई टू कवर इट। नेक्स्ट, हाउ डू वी फाइंड आउट फाइनेंस रोल इन एमएनसीज ऑफ कैंपस? लोकेश जी, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ पे हम लोग लिस्ट शेयर करते रहते हैं, वहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। सर डेलॉयट इंडिया सी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, नंबर इतना मत सोचो, अप्लाई करो। अटेम्प्ट्स कैन बी स्किप्ड बाय रेफरेंसेस, लाइफ में सबसे ऊपर आता है रेफरेंस, तो कलेक्ट एज मेनी एज रेफरेंस एज पॉसिबल। But I'm not fluent in English. Two things. First is bot. Second, apply practice kare with friends and peers. I'm currently working as one of the big four. So now the interview questions mostly based on my current role that I am doing an articleship experience. So that is going to be there. Okay. International companies का CTC कितना रहेगा? Again, if you're talking about companies, those are going for Dubai, तो they'll offer you somewhere between 18 to 22 lakhs. ये दुबई का हो जाता है। अफ्रीका जाओगे तो 50-60 लाख चला जाता है, बट अगेन इट कम्स विद अ रिस्क ऑफ। ठीक है, सो यू नीड टू डिसाइड वेदर यू वांट टू लीव और वेदर यू वांट टू लीव। ठीक है, तो दैट इज देयर। ऑल्सो आर्टिकलशिप एक्सपोजर इज नॉट गुड, व्हाट टू डू नाउ? आप जीआर पे आ जाइए, जीआर में सब कुछ कवर हो जाएगा, आपको कवर करवा देंगे आयुषी जी। सर आई हैव क्लियर्ड इन थर्ड अटेम्प्ट एंड स्कोर इजंट क्वाइट अर्लियर, बट आई हैव अ गुड आर्टिकलशिप एक्सपोजर, तो यू नीड टू लर्न आर्ट ऑफ सेलिंग व्हिच इज देयर। सर ये क्लासेस यूट्यूब पे चलेगी क्या? नहीं बेटा, जीआर तो एकदम क्लोज एंडेड सेशन होता है, वो यूट्यूब पे क्यों डालेंगे? ठीक है। सर आई डिडंट गेट रजिस्टर, डू आई हैव अ चांस टू एटलीस्ट गेट रजिस्टर फॉर स्मॉलर कैंपस? अगर कैंपस फॉर्म नहीं भरा है तो 29th इज द लास्ट डे, भर दीजिए। सर इफ मॉर्निंग बैच ऑफ जीआर इज मिस्ड वेदर वी कैन अटेंड द इवनिंग बैच? यस, द सेशन इज गोना बी पैरेलल। सुबह भी वही चलेगा, शाम को भी वही चलेगा, बट दैट डज नॉट मीन दैट जो सुबह जोक मारा शाम को भी सेम जोक मारूंगा। ठीक है, तो प्लीज डोंट गेट सो मच इमोशनल हियर। सर नेक्स्ट, सर इफ ऑफ कैंपस रिजेक्टेड बाय कंपनीज दिस इज चांस ऑफ शॉर्टलिस्टिंग, इतना मत सोचो, पहले अप्लाई करो। आई गॉट अ जॉब बिफोर द आईसीआई कैंपस इंटरव्यू स्टार्ट्स, एम आई obliged to give an interview? You just need to update to the companies which are there. Tell me about the actual vacancy will be there company wise in campus. तो स्वराज अभी लिस्ट आने का है, राइट, विच इज देयर, वंस इट इज आउट विल डिस्कस ऑन द सेम। So does late completion of articleship affects our shortlisting? थोड़ा बहुत अफेक्ट कर सकता है, right? To some extent, it might affect. But yes, again, you need to have a good story by telling them कि I'm a first attempt pass out. So please do consider. Is masterclass available for banking? Investment banking की दोस्त available है, banking की नहीं है दोस्त, investment banking की है। Can we send a resume to shortlisted companies before interview? Mostly the companies are going to be asking you for your resume, which is there. Great. I've covered all the doubts. I'm not able to believe. अच्छा, एनी मोर डाउट्स? बेशरम होके डाउट्स पूछे गाइस, बेशरम होके डाउट्स पूछे, एकदम बेशरम हो जाए और डाउट्स पूछे। जूम वाली जनता यूट्यूब पे जाके डाउट पूछे, यूट्यूब वाली जनता यूट्यूब पे जाके डाउट पूछे, राइट, सो दैट ऑल द डाउट्स आर कवर्ड इन अ वेरी नाइस वे। एनी मोर डाउट्स, एनी मोर डाउट्स? राइट, आई जेन्युइनली वांट यू गाइस टू गेट इनटू गुड कंपनीज, राइट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप हमारे से ही प्रिपेयर करें, बस आई एम टेलिंग यू द पाथवे, आप खुद से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट यू नीड टू फॉलो द स्टेप्स व्हिच आई एम टेलिंग यू। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द फीडबैक, बिकॉज अंडरस्टैंड वन थिंग, फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट फॉर चैंपियंस। अगर आपको फीडबैक नहीं मिलेगा तो आप इंप्रूव नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है वीडियो देख के कर सकते हो, इट्स अ रॉन्ग परसेप्शन, आई एम टेलिंग यू। वीडियो देख के आप नहीं जज कर सकते मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ, तो यू नीड टू स्पीक, राइट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द डाउट्स, राइट। आई होप यू गाइस मस्ट हैव एंजॉयड द सेशन। एक दो और डाउट्स आ गए हैं। आयुषी जी नर्वस नहीं होना है बेटा, प्रैक्टिस करोगी तो अपने आप इंटरव्यू का फियर खत्म हो जाएगा। Right, I got a call for Accenture R2R role. Interview is not scheduled yet. Do you know the days they are taking an interview? वो कंपनीज को पता है। LinkedIn URL को resume का वो क्लोज नहीं, समझ में नहीं आया। What all profiles are offered by आदित्य बिरला ग्रुप? Mostly they'll offer you finance का रोल, जो हमने चार्ट बनाया था अभी वही मिलेगा। What about PSUs? काफी कम PSUs आ रही हैं कैंपस में, बट यस, जब शॉर्टलिस्टिंग होगा तो उसमें देख लेना। सैलरी निगोशिएट कैसे करें? अरे बेटा, इस पे तो अलग से मैं 1 डेढ़ 2 घंटे का सेशन लेता हूँ, तो मेरा फेवरेट सेशन है। 31st को
31 को इंटरव्यू है, जीआर के थर्ड डे के बाद मॉक इंटरव्यू अरेंज हो सकता है क्या थर्ड डे पे? तो अगर आपको चाहिए तो वी कैन गिव यू द कूपन कोड, है ना। डीटी डोमेन में कितने राउंड्स होते हैं डायरेक्ट बिग फोर में? मोस्टली दे हैव 2 to 3 राउंड्स। फर्स्ट इज मैनेजर राउंड, सेकंड इज पार्टनर राउंड। सीवी में 54% इंस्टेड ऑफ 56% मेंशन है, इतना टेंशन मत लो। व्हाट विल बी द कंपटीशन एट बैंगलोर सेंटर? अप्रोक्सीमेटली बैंगलोर सेंटर 21 और 22% चूज करते हैं। तो मान लो 6,000 बच्चे बैठे हैं, तो 1200 से 1500 बच्चे बैंगलोर सेंटर में रहेंगे। दिल्ली और मुंबई सेंटर में सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 2000 बच्चे वहां रहते हैं। बाकी सेंटर में 300 400 बच्चे आपको मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, कैंपस प्लेसमेंट में रिज्यूम में यूआरएल लिंक गलत हो गई है, इतना टेंशन वाला ले। जीएल एंड एमआईएस क्या होता है? जीएल इज जर्नल लेजर, एमआईएस इज मंथली इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट व्हिच इज गोना बी प्रिपेयर्ड एंड नीड टू सबमिट टू एन इन्वेस्टर। तो उसमें आपको काम करना पड़ता है। कैंपस में कंपनीज लिस्ट में उन उनमें क्या और कंपनीज ऐड हो सकती है? हाँ, कंपनीज ऐड होगी विच इज देयर। क्रेडिट मैनेजर इन एनबीएफसी इज अ गुड ऑप्शन। अगेन, अगर आपको बिजनेसेस समझने में मजा आता है तो क्रेडिट मैनेजर रोल में जाइए। व्हाट इफ वी डोंट लाइक द कंपनीज दैट शॉर्टलिस्ट अस? आप ठीक है, मतलब कुछ चीजें पसंद नहीं होती है तो रिजेक्ट कर देने का, और क्या। ठीक है। सर, जेपी मॉर्गन इज गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी इन के वाई सी रोल, इज इट गुड? अगेन, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टू आईबी साइड तो यू कैन गो फॉर इट। बट ये थोड़ा सा बैक ऑफिस है दोस्त, थोड़ा सा ध्यान रखिए। एफपीएनए के लिए स्टार्टअप कैसा रहेगा? अच्छा है, एफपीएनए स्टार्टअप मिलता है तो यू कैन गो फॉर इट, बट एक बार स्टार्टअप में जा रहे हो, दो चीज चेक करना। फाउंडर्स हिस्ट्री और फंडिंग। बेटा नहीं तो पता पड़ा ज्वाइन कर लिया, फंडिंग ही नहीं है उनके पास। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट चीज यू नीड टू चेक। अनेबल टू क्लियर द एचआर राउंड, प्लीज प्रैक्टिस करें। इफ यू नीड अ प्रैक्टिस, आई टोल्ड यू कैन जॉइन द वर्कशॉप एज वेल। सर, यू सेड फाइनेंस क्वेश्चन बैंक इज अवेलेबल, आई कांट फाइंड इट। बेटा सीएमओंग पे जाइए, वेबसाइट पे मोर पे क्लिक कीजिए, फ्री रिसोर्सेज, वहां पे आपको मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक। यस सर, इज इट रिकमेंडेड टू एडिट एंड अपडेट अ रेज्यूमे अकॉर्डिंगली टू एवरी कंपनी? द आंसर इज यस। क्रेडिट मैनेजर का बता दिया। व्हाट whether our resume will be shared with the companies before the shortlisting or after the shortlisting? जनरली बिफोर होता है, बट ठीक है। अभी क्वेश्चन बैंक बता दिया, क्वेश्चन बैंक बता दिया। ऑफिस टाइमिंग का इशू आ रहा है, कैन वी डू हाफ सेशन इन 53rd एंड हाफ इन 54th? सुमित जी, ऑफिस या तो आप जल्दी चले जाइए या तो आप जल्दी आ जाइए, या तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, वो ऐड देख लीजिए। अगर नहीं होता है तो आधा मॉर्निंग में देखो, आधा इवनिंग में देखो, वो भी आप कर सकते हो। बट थोड़ा बहुत आगे पीछे चलेगा सेशन, तो इतना नहीं है ना। कैन आई चेंज माई सेंटर आफ्टर रजिस्ट्रेशन? रितु जी, एक बार मेल कर दीजिए ऐसे को, अगर आपको लगता है तो। बट मोस्टली नहीं करेंगे, बिकॉज 25th लास्ट डेट था सेंटर चेंज करने का। राइट, 25th था, अभी वो चला गया। ओके सर, क्वेश्चन बैंक अवेलेबल एट योर साइट इज सफिशिएंट और डू यू नीड टू प्रिपेयर? बेटा टेक्निकल प्रिपेयर करना पड़ेगा, बट पहले उतना तो पढ़ लो। राइट, जीआर क्लासेस को अटेंड करने के लिए कोई डोमेन सिलेक्ट करना पड़ेगा क्या? नहीं, आपको बस अवेलेबल रहना है, माइंडसेट क्लियर रखना है, और रेडी टू वर्क हार्ड हमें लोग चाहिए। और आप मेहनत कर सकते हो तो आइएगा। राइट, बिकॉज मेहनत कराएंगे वहां पे। यस। शॉर्टलिस्टिंग क्या टाइम? 7th को आएगी बेटा शॉर्टलिस्टिंग। जेनपेक्ट इज हायरिंग फॉर विच लोकेशन करेंटली? मोस्टली आपको नॉर्थ साइड दिखेगी, नोएडा साइड हायरिंग ज्यादा चल रही है। एफडीडी और एमएनए का सेशन ले लेंगे राजा, टेंशन ना ले। आई वॉन्ट टू मेक अ प्रोफाइल फॉर एनालिटिक्स रोल। तो एनालिटिक्स भी काफी अच्छा एक डोमेन है, डेटा एनालिटिक्स ग्रोइंग इन लॉट ऑफ कंपनीज, यू कैन टारगेट फॉर दैट रोल विच इज देयर। अकॉर्डिंग टू यू विच डोमेन इज गुड? नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते, आपको पहले डोमेन समझना पड़ेगा। राइट, ऐसे में कमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज इट्स योर करियर, यू कैन नॉट लीव योर करियर कि जस्ट आप बोल दो ये कौन सा डोमेन अच्छा है। सभी डोमेन अच्छे हैं यार, बट यू नीड टू डिसाइड विच डोमेन यू लाइक। एट टाइम ऑफ शॉर्टलिस्टिंग डू द कंपनीज इन्फॉर्म अस सीटीसी? द आंसर इज यस। जय कुमार, सीटीसी बताती है। स्टार्टअप हैविंग अ टर्नओवर 500 करोड़, इज इट बेटर टू जॉइन रेनाउंड स्टार्टअप? गोविंद, फाउंडर्स हिस्ट्री चेक करें और फंडिंग चेक करें। कैन वी डिस्क्लोज अ क्लाइंट नेम इन आवर वेब जॉब वेबसाइट एंड एप्स? हाँ, कर सकते हो, क्योंकि आईसीए कैंपस को तो वैसे भी डिस्क्लोज किया हो, है ना, और एमसीए से तो निकाल ही सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द क्वेरीज गाइस, राइट, एंड आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड द सेशन। गाइस, कैसा लगा सेशन आपको? मजा आया, नहीं आया, हाँ ना ना हाँ? राइट, आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिला? जरूर बताइए गाइस चैट पे।
राइट। आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड इट। अनम्यूट करके अनम्यूट चैट पे भी बता सकते हैं, जूम वाली जनता, यूट्यूब वाली जनता। अरे बोलो बोलो। राइट। राइट, जूम वाली जनता कैन राइट इट इन द chat as well. Right, and YouTube वाली जनता, I hope you must have enjoyed it. You must have got a lot of clarity which is there. Right, आपको क्लैरिटी मिला होगा काफी ज्यादा कि क्या करना है करियर में, कैसे करना है। राइट, so that is there, and I genuinely want you guys to get into good companies, and for that CMONG team is doing a lot of things from our side. जितना अवेलेबल है उतना फ्री में दे रहे हैं। राइट, एंड ऑफ कोर्स अगर आप सोचो फ्री में इतना दे रहे हैं तो वर्कशॉप में क्या क्या चीजें मिलेगी और क्या क्या मिलेगा। ठीक है, so that is there. So request you to please check our page once, right? You'll get a clarity, right? And if you're interested, don't forget to register for the same. Batch is starting from 29th. Right? So I wish you all the best, guys. Right? और बढ़िया से पढ़ो, right? इंटरव्यू की तैयारी करो, फटाफट सिलेक्ट हो जाओ और पैसा वैसा कमाओ, मजा आएगा। राइट, चलो बाय बाय गाइस, ऑल द बेस्ट।